Hello and welcome everyone on this YouTube channel of IQCIVILS IAS Academy. So today in this session, I'm going to discuss one of the most important issue, that is Iranian revolution and its crisis, or you can say issues. Okay. Now, first of all, I would like to tell you why this issue is important. As we all know that Iranian revolution is one of the biggest event in the contemporary world history. इम्पोर्टेंट इवेंट है कंटेम्प्ररी वर्ल्ड हिस्ट्री में. ओके, as well as it will help you to understand current geopolitics. Getting my point? So that is why this issue is very important for your examination. So this issue is related to your world history also, that is under GS paper 1. Okay, as well as under GS paper 2, that is international relations. सो बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर एक बार इरानियन रेवोल्यूशन वेस्ट एशियन क्राइसिस पर आप एक वीडियो बना दे. तो IQ सिविल्स IAS एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आज मैं आप सभी के लिए ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ. ओके, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इरानियन रेवोल्यूशन, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है वेस्ट एशिया में. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द ज्योग्राफी ऑफ ईरान. Clear? So before starting the session, I would like to tell you that IQ Civils IAS Academy is going to launch its new integrated general studies batch, and the dates are given here as you can see on your screen: 5th of August and 10th of August. Okay, so the students, those who are planning to prepare for UPSC as well as APSC examination, they can enroll their name. ओके, एंड इस साल IQ सिविल्स IAS एकेडमी बहुत सारे एडिशनल कोर्सेज एंड बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स के साथ आ रहा है. और जितने भी बच्चे इस टाइम पर फिनेंशियल इश्यूज फेस कर रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी सारे अलग अलग कोर्सेज हैं. ओके, बहुत ही कम प्राइस पर. तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं हमारे सेंटर पर, जो कि गुवाहाटी में है, कृष्ण बस्ती कामाख्या टावर. Okay, so for more information, you can call on this number as you can see here. Okay, these two numbers. Okay, these, ये जो नंबर हैं दोनों, ये डायरेक्टर के नंबर हैं, एंड आप हमारे काउंसलर से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. क्लियर? तो जल्द से जल्द आप अपने नेम को एनरोल कराएं और जल्द से जल्द अपनी तैयारी को एक नई दिशा, एक नया गाइडेंस, एक नई डायरेक्शन दें. क्लियर? So now I'm going to tell you the contemporary issue, that is West Asian country, that is Iran. Okay, so first of all, let me tell you, you can see this map here, why Iran is important. As you can see that Iran is an important country. Okay, it is an important country in West Asia region. In West Asia region. Okay, now why this country is important? So let me tell you, as you can see the location of Iran. In the north, you can see Caspian Sea, very important. Then Persian Gulf, okay, which is important for trade and commerce. Okay. Now, as you can see here that Iran, which is also a neighboring country of Central Asia, that is Turkmenistan. So Iran is also having a connectivity towards Central Asia, then Afghanistan, which is also very important, and then Pakistan. Okay, so Iran is important because of three reasons. So when we say importance, so importance of Iran because of three reasons. So now what are those three reasons? Okay, so those three reasons are, so try to understand. Okay, now three reasons. First of all, historical background. So we need to understand historical background first. Okay. Second important reason is Iran's strategic location. As you can see here, Iran's strategic
location. As Iran is connected with West Asia, it is a part of West Asia, which is also connected with Turkmenistan, that is a part of Central Asia. Okay, so Iran is also very important. Okay, then third important thing. Okay, and ये जो तीसरी importance है ईरान की, this importance cannot be neglected. That is, Iran is having oil reservoir. Oil reservoir. Okay, and Iran का जो oil है, so let me tell you my students that Iran's oil is less in sulfur. मतलब ईरान के ऑयल में सल्फर कम है, एंड जिस ऑयल में सल्फर कम होता है वो पोल्यूशन कम करता है. दैट इज व्हाई द ऑयल ऑफ ईरान इज आल्सो important. Clear? So now I will be discussing each and everything. So first we'll try to understand the historical background. So I will be telling you the historical background since ancient times. Getting my point? So as you can see here, that background of Iranian revolution. Okay, so in this slide it is given here that from 1951 की जो कहानी लिखी हुई है, but I will be telling you from ancient times first of all. Okay, so first we are going to discuss the historical background. So now try to understand this concept. Okay. Now, historical background. So India was also having a brilliant civilization in ancient time, that is Indus Valley civilization. As you all know that the contemporary civilizations during the time period of Indus Valley civilization, that is Mesopotamian civilization, Sumerian civilization was also there. Okay, so in ancient times, now try to understand that in ancient time there was a civilization, okay, called as Sumerian civilization. Ancient time एक civilization थी contemporary to Indus Valley, that is Sumerian civilization. Now, अब इसका ईरान से लेना देना क्या है? So let me tell you, Iran was a center of this civilization. Okay, center क्या था? ईरान. So Iran was the center of Sumerian civilization. Getting my point? So Iran, that means Sumerian civilization, was having trade relations with major civilization of ancient period. Okay, that means this is having trade relations with major civilizations of that period. Okay, major civilizations, trade relations with Mesopotamia civilization. Okay, then then Egyptian civilization, and third important Indus Valley civilization. Indus Valley civilization. So ईरान, that means Sumerian civilization के contemporary civilizations के साथ trade relations काफी अच्छे थे. Getting my point? So Iranian civilization is also called as Sumerian civilization. Getting my point? Now, let me tell you that ईरान का जो religious scripture है, okay, that scripture is also contemporary to Rig Veda. Okay, so let me tell you that Iranian book, okay, Iranian book, that is Avesta. इस बुक का नाम है अवेस्ता. ओके, रिलीजियस स्क्रिप्चर है, एंड दिस इज कंटेम्पररी ऑफ ऋग वेदा. कंटेम्पररी ऑफ ऋग वेदा. This much is clear to all of you. Okay. Now, if you see the location of Iran, as you can see here in the map, now since ancient time, Iran was also a part of Silk Route because Iran was a part of West Asia. Okay, that is why Iran was also a part of Silk Route. So that is why, as you can see here, this Persian Gulf is important gateway for trade and commerce. That is why. So ये जो waterway आपको दिख रहा है, this is important for trade and commerce. Clear? Now, so remember this thing, ईरान की position काफी ज़्यादा important है. Okay, now Iran had an important position in ancient Silk routes. So this is also having important position. Okay, so Iran is having important position in ancient Silk route, part of ancient Silk
route. This much is clear to all of you. So this is the geographical importance. Okay. So this is the historical background of ancient times. Okay. So we have discussed this historical background. Now I'm going to tell you the strategical importance of Iran. Now this second reason you have. Okay. So try to understand the strategical importance of Iran. Okay. So now strategic importance. Okay, now we'll try to understand the strategical importance. So Iran was the important trade center in the Silk Route. Okay, so Iran, remember this thing, ये क्या है? Important center है. Okay, this is the important center for trade since ancient time in Silk Route. Silk Route. Getting my point? Okay. Now, so that is why it is having strategic importance in West Asian region. Okay. Now, Iran is surrounded by many West Asian and Central Asian countries. So, Iran ये जो है, okay, this is surrounded by many West Asian and Central Asian countries. Like if you can see here, Afghanistan is connected with Iran, then Pakistan is connected with Iran. Okay. तो इन चीजों के थ्रू आपकी मैपिंग भी कवर हो जाएगी, सो बहुत ध्यान से समझिएगा. क्लियर. देन आप यहाँ पर देख सकते हैं रशिया इज ऑल्सो ओके नॉर्थ में रशिया इज ऑल्सो कनेक्टेड विद ईरान. देन एज यू कैन सी हियर अजरबैजान इज ऑल्सो कनेक्टेड विद ईरान. क्लियर. देन इराक इज ऑल्सो अ नेबरिंग नेशन ऑफ ईरान. Okay, then this side Saudi Arabia is also okay connected with Iran only. Okay, then UAE. Okay, UAE is also there. Okay, these countries are very important. Then Kuwait, Qatar, ये सारी countries जो हैं ईरान के almost neighboring regions हैं. Getting my point? Then Central Asian Turkmenistan is also there. Okay, so these countries are neighbors. So इसीलिए ईरान की जो location है वो काफी ज़्यादा important है. Okay, so in this way we can say that at the beginning of 20th century Iran appeared to be a great importance to the Western world. तो इसीलिए 20th century में now let me tell you that in 1910 that the oil was discovered in Iran. तो जैसे ही ऑयल की डिस्कवरी हुई ईरान में सो ईरान क्या हो गया. ईरान ओके ईरान याद रखिएगा became important for Western world. Okay, Western world in 20th century because of oil discovery in Iran. This is the main reason. Okay. Now, after Second World War, that means the second decade of 20th century, this proved to be a turning point for Iran, especially in 1925 under the Raza Khan. So remember this thing that in 20th century, ये जो 20th century है, ये turning point है ईरान के लिए. 20th century is a turning point for Iran. Okay, this is a turning point for Iran. Okay, now since 1925 ईरान किसके कंट्रोल में. ईरान was under the control. Okay, ईरान was under the control of Raza Khan. Raza Khan. This is the most important thing. Okay, अब आप कहेंगे कि सर रजा खान क्यों आप नाम ले रहे हो बार बार. ओके, ऐसी क्या इम्पोर्टेंस है रजा खान के टाइम पीरियड में. क्लियर. सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली. बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा. सो फर्स्ट आई विल बी टेलिंग यू द रेन टाइम पीरियड ऑफ रजा खान. ओके, तो जितने बच्चे आप में से सभी लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं और साथ ही साथ नोट्स जरूर बनाइए बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी एज वेल एज एपीएससी एग्जामिनेशन. नाउ फर्स्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द टाइम पीरियड ऑफ रजा खान. ओके, so the reign of Raza Khan.
और द टाइम पीरियड ऑफ रजा खान। ओके, तो अब हुआ ये कि रजा खान जो थे वो ईरानियन मिलिट्री ऑफिसर थे एंड ही केम इनटू पावर इन ईरान विद द बैकिंग ऑफ ब्रिटेन। सो अब हुआ क्या इन 1925, ओके, with the support of Britain, okay, with the support of Britain, okay, military officer, military officer of Iran, that is Raza Khan, okay, military officer of Iran, that is Raza Khan, he came into power, came into power, इनको ब्रिटिशर्स ने सपोर्ट किया और ये पावर में आए। ओके, नाउ अब अगर आप किसी की हेल्प करते हो उसको इलेक्शन जितवाने में, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि आगे जाके वो इंसान, वो लीडर आपको टेंडर दिलवाएगा, आपकी हेल्प करेगा। ओके, सो इट सीम्स लाइक अ रिवॉर्ड फॉर ब्रिटेन। गेटिंग माई पॉइंट? सो बिकॉज ऑफ दिस रजा खान ने क्या किया? रजा खान गेव रिवॉर्ड टू ब्रिटेन, गेव रिवॉर्ड टू whom? टू ब्रिटेन। तो अब ब्रिटेन का रिवॉर्ड क्या होगा? ब्रिटेन की इच्छा क्या होगी? ब्रिटेन की नजर होगी ईरान के ऑयल रिजर्व्स पर। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस रजा खान गेव परमिशन, ओके, टू ब्रिटिश पेट्रोलियम टू establish एंग्लो iranian oil industry. Getting my point? So he gave permission. Okay, so British, so रजा खान ने क्या किया? रजा खान gave परमिशन। अब परमिशन किसको दी? ही गेव परमिशन टू ब्रिटिश पेट्रोलियम। ओके, बहुत ध्यान से समझिएगा ये चीज, ब्रिटिशर्स को परमिशन दे दी इन्होंने। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस ब्रिटिशर्स ने स्टैब्लिश की कंपनी एंग्लो इरानियन ऑयल इंडस्ट्री, एंग्लो इरानियन ऑयल इंडस्ट्री। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, रिमेंबर दिस थिंग। अब यहीं पे एक चीज याद रखिएगा, एक वेस्टर्न कंट्री ईरान में आ रही है, ऑयल की कंपनी खोल रही है। दूसरी तरफ एक कम्युनिस्ट नेशन जो कि 1917 में ऑलरेडी बर्थ हो चुका है। इन 1917 यूएसएसआर, दैट मीन रशियन रेवोल्यूशन टुक प्लेस, okay, and this gave birth to a first communist nation in the world, that is USSR. एंड मैंने आपको बताया कि रशिया इज ऑल्सो अ नेबरिंग नेशन ऑफ ईरान, तो इससे टेंशन किसको होगा? यूएसएसआर को टेंशन होगा। सो दिस बिकेम अ कॉज ऑफ टेंशन फॉर यूएसएसआर। सो ये किसके लिए टेंशन हो गया? सो दिस बिकेम अ टेंशन फॉर यूएसएसआर कि भाई ब्रिटिशर्स कैसे आ रहे हैं यहाँ पर। सो प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश कैपिटलिज्म नियर सोवियत कम्युनिज्म, यहां पर टेंशन किस चीज की है? यहां पर टेंशन है कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की। दैट मींस, ओके, दैट मींस ब्रिटिश कैपिटलिज्म। सो दिस वाज द टेंशन बिटवीन ब्रिटिश कैपिटलिज्म एंड सोवियत कम्युनिज्म, सोवियत communism. This is the main point of tension. Okay, remember this thing. So this caused tension between these two countries. So this became a part of tension between Britain and USSR. इससे अब ब्रिटेन और यूएसएसआर के बीच में tensions आ गए थे। Clear? Now, okay. Now in 1925, अब 1925 में क्या हुआ? रजा खान ने एक डायनेस्टी स्टैब्लिश की, अपनी मोनार्की स्टैब्लिश की ब्रिटेन के हेल्प से। सो रजा खान ने क्या किया? रजा खान, he created his dynasty and the name of his dynasty was Pahlavi dynasty. Pahlavi dynasty. And this dynasty was created with the support of Britain. Britain support कर रहा था। ओके, रिमेंबर दिस थिंग। अब आपको ये चीज समझना पड़ेगा। क्लियर? ये याद रखिएगा। अब इसी साल 1925 क्यों इंपॉर्टेंट है? In the same year itself, USSR relieved from its internal trouble.
ओके, जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ था तो याद रखिएगा रशियन रेवोल्यूशन के बाद एक सिविल वॉर हो रहा था। ओके, सो उस सिविल वॉर, वो जो सिविल वॉर था रशिया का 1918 से 1925 तक चला था, एंड फाइनली रशिया का सिविल वॉर 1925 में खत्म हुआ था। गेटिंग माय पॉइंट? सो ये याद रखिएगा। सो नाउ आपको कंटेम्पररी इश्यूज भी ध्यान में रखना है कि रशिया में क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब आप जो भी देखेंगे रशियन रेवोल्यूशन के बाद जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स देखेंगे, ज्यादातर आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स दिखेंगे। समझ में आ रहा है? रिमेंबर दिस थिंग। सो इन द सेम ईयर इटसेल्फ यूएसएसआर relieved from civil war. Okay, si- relieved from trouble internal trouble, that means civil war. Okay, and this civil war was started in USSR from 1918, that means after Russian Revolution, and it was held till 1925. So finally in 1925 this civil war was ended. अब यहाँ से, अब देखो जितने भी, याद रखिएगा, जितने भी समझदार लोग होते हैं वो हमेशा पहले अपने एक फ्रंट को ध्यान देंगे तब दूसरा फ्रंट ओपन करेंगे। अब रशिया का, यूएसएसआर का यहाँ पे एक फ्रंट खत्म हो चुका है, दैट इज इंटरनल वॉर खत्म हो चुका है, तो अब यूएसएसआर अपनी फॉरेन पॉलिसी पे ध्यान दे सकता है। ओके, सो फ्रॉम हियर आफ्टर द एंड ऑफ दिस सिविल वॉर, okay, so USSR started giving backing to anti-British lobby of Iran. अब क्या हुआ कि ईरान में जो लोग वेस्टर्न कल्चर के खिलाफ थे, ओके, सो ईरान में जितने भी एंटी ब्रिटिश लॉबी थी, एंटी ब्रिटिश लॉबी ऑफ ईरान, ओके, now this anti-British lobby of Iran won was supported by USSR. Getting my point? So these are supported by, जितने भी ब्रिटेन के खिलाफ हैं ईरान में, they were supported by USSR. ओके, कि तुम लोग ब्रिटिश के खिलाफ हो जाओ। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, ओके, तो मेन इशू क्या था कि देखो ब्रिटिश की, ये जो ब्रिटिश है, ओके, ये किस तरीके से डायनेस्टी सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? सो बिकॉज ऑफ दिस, ओके, अनरेस्ट स्टार्टेड अगेंस्ट ब्रिटेन, तो यहीं से अनरेस्ट शुरू हो गई थी ब्रिटेन के खिलाफ। ओके, रिमेंबर दिस थिंग। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो अब 1931 में क्या होगा? अब 1931 में याद रखिएगा कैपिटलिस्ट जो हैं, दैट मीन्स ब्रिटेन कैपिटलिस्ट जो हैं, ये क्या करेंगे? ये एक सप्लीमेंट ट्रीटी करेंगे जिसमें ईरानियन गवर्नमेंट की रॉयल्टी को बढ़ा देंगे। गेटिंग माय पॉइंट? ईरानियन गवर्नमेंट की रॉयल्टी को बढ़ा दिया जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? ये याद रखिएगा। सो अब ब्रिटिशर्स को क्या करना है? ब्रिटिशर्स को इस एंटी ब्रिटिश लॉबी को रोकना है ईरान में, तो इसके लिए 1931 में ब्रिटिश ने क्या किया? इन 1931 ब्रिटिश इंक्रीज्ड रॉयल्टी ऑफ Iranian government. Getting my point? Royalty of Iranian government. Getting my point? Okay, so through supplementary treaty के थ्रू इस रॉयल्टी को इंक्रीज कर दिया, बट ऑपोजिशन अभी भी सेटिस्फाई नहीं था, मतलब एंटी ब्रिटिश लॉबी स्टिल वाज नॉट सेटिस्फाइड, एंटी ब्रिटिश लॉबी स्टिल नॉट satisfied. This much is clear to all of you. Okay, this is the reign of Raza Khan. Okay, now अब रजा खान के बाद कौन आए? सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म होता है तब एक नए लीडर आते हैं जिनका नाम था मोहम्मद मोसादगे। ओके, मोहम्मद मोसादगे, तो इनका टाइम पीरियड शुरू होता है। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ, सो आई होप दिस मच इज क्लियर, स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझना है। नाउ द टाइम पीरियड ऑफ रेन ऑफ मोहम्मद मोसादगे। ओके,
So as you can see here, that by the end of Second World War, United States provided Iran with economic and political support. यूएस ने ईरान को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सपोर्ट दिया था। उस समय यूएस दोस्त था किसका? ईरान का। और उसके बदले में, ओके, इन रिटर्न फॉर देयर मेंबरशिप इन द डेमोक्रेटिक वेस्टर्न ब्लॉक, ओके, ये याद रखिएगा। तो उसके बदले में वो ये चाहते थे, यूएस कैपिटलिस्ट कंट्रीज, की ईरान उन्हें सपोर्ट करे। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। सो अब हुआ क्या, सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज एंडेड इन 1945। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके। एंड ब्रिटेन अब जो था वो वीक हो गया था। ब्रिटेन की इकोनॉमी पूरी तरीके से खत्म हो गई थी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सो ब्रिटेन्स पोजीशन बिकेम वीक। And taking advantage of this situation, Muhammad Mossadegh, who was the leader of anti-British group, overthrew the रजा खान regime। और इसी, अब यहाँ पर देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, ब्रिटेन पोजीशन बिकेम वीक, ब्रिटेन पोजीशन बिकेम वीक। क्लियर? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस क्या कर रहा है, ईरान को इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सपोर्ट दे रहा है इन रिटर्न फॉर देयर मेंबरशिप इन डेमोक्रेटिक वेस्टर्न ब्लॉक, कि उसके बदले में ईरान को डेमोक्रेटिक वेस्टर्न ब्लॉक में मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। गेटिंग माय पॉइंट? अब इसी चीज का फायदा उठाते हुए, जो मैंने आपको बताया था, यूएसएसआर जो एंटी ब्रिटेन एंटी कैपिटलिस्ट रिजीम था, उनका एक लीडर था मोहम्मद मुसादगे। ओके, अब इसने क्या किया, सो ही वॉज टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। मोहम्मद मुसादगे, ही वॉज द लीडर ऑफ एंटी ब्रिटिश ग्रुप। ये कौन है? लीडर ऑफ एंटी ब्रिटिश ग्रुप, लीडर ऑफ एंटी ब्रिटिश ग्रुप, ओके, नेशनल फ्रंट का लीडर था ये। सो अब आप देखेंगे एंटी ब्रिटिश ग्रुप, इसने क्या किया, ही ओवरथ्रू रजा खान रिजीम, ओवरथ्रू रजा खान रिजीम, रजा खान रिजीम हु वाज सपोर्टेड बाय ब्रिटेन। कब इसको हटाया? 1951 में, ये याद रखिएगा। सो दिस वाज एन अटैक ऑन हुज इंटरेस्ट? ब्रिटिश इंटरेस्ट। ये किसके ऊपर अटैक था? दिस वाज एन अटैक ऑन ब्रिटिश interest. Remember this thing. Okay. But before Mossadegh would take any action, a coup organization overthrew the Mossadegh from the throne. Okay, तो इससे पहले याद रखिएगा, मोहम्मद मुसादगे जो हैं, he became the first democratically elected Iranian government in 1951। तो मोहम्मद मुसादगे ने 1951 में अपनी गवर्नमेंट बनाई। इससे पहले ये कोई डिसीजन ले पाते, समझ में आ रहा है? तो इनकी, याद रखिएगा, मुसादगे सिर्फ रूल कर पाए थे 1955 तक। क्लियर? सो अब ये जो मुसाद्दिक हैं, ही वॉज अ मॉडर्न लीडर, सेक्युलर लीनिंग प्रोग्रेसिव लीडर थे, पढ़े लिखे अच्छा लीडर था। ओके, एंड ही वॉज एबल टू गेन द ब्रॉड सपोर्ट ऑफ बोथ सेक्युलर एलीट एज वेल एज इरानियन उलेमा। Secular elite people, that means intellectual class, और Iranian ulama means religious scholars। Getting my point? तो ये एक ऐसा लीडर था जिसके पास दोनों का सपोर्ट था, ऑर्थोडॉक्स का भी एंड लिबरल्स का भी, जो ईरान के थे। So after coming to power, Mossadegh made a bold move to address the issue of exploitation of Persian oil by Western power। तो Mossadegh कब आया पावर में? 1951 में। तो जैसे ही ये पावर में आया, इसने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मूव लिया। इसने इश्यू सामने ले आया कि किस तरीके से वेस्टर्न पावर्स, हाउ वेस्टर्न पावर्स आर एक्सप्लॉइटिंग देयर ऑयल, ओके, थ्रू नेशनलाइजिंग द प्रीवियसली ब्रिटिश ओन्ड एंग्लो इरानियन ऑयल कंपनी। गेटिंग माई पॉइंट? सो वॉट ही डिड, मोसादेक ने क्या किया, मोसादेक ने एंग्लो इरानियन ऑयल कंपनी को नेशनलाइज करना की कोशिश की। समझ में आ रहा है? सो ही वॉन्टेड दैट दिस ऑयल कंपनी शुड बी नेशनलाइज, ये सिर्फ ईरान की कंपनी होनी चाहिए। तो अब अगर ईरान का लीडर
अगर ब्रिटिश ऑयल कंपनी को नेशनलाइज करेगा तो ये किसके अगेंस्ट में, ये वेस्टर्न कंट्रीज के अगेंस्ट में। ओके, सो दिस डिड नॉट वर्क आउट इन हिज फेवर। ओके, एंड दिस जिसकी वजह से ब्रिटिश एंड यूएस इकोनॉमिक सैंक्शंस वर इम्पोज। तो ब्रिटिशर्स और यूएस ने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए, जिसकी वजह से जो ईरानियन इकोनॉमी थी वो पूरी तरीके से क्रिपल हो गई। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, एंड इसी वजह से आप देखेंगे दैट इन 1953 मुसादिक वॉज रिप्लेस्ड इन अ मिलिट्री कूप। तुरंत मिलिट्री कूप हो गया, मिलिट्री रूल आ गया। Getting my point? Okay, so Mossadegh, remember this thing. So before Mossadegh would take any action, a coup organization overthrew Mossadegh from the throne. तो तुरंत मिलिट्री कूप हो गया। तो अब आप एक चीज देखिए, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ में गया ईरान का लीडर, तुरंत वहां पे कूप करवा दिया। और ये कूप किसने करवाया था? यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी ने, दैट इज सीआईए एंड ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने। दैट इज गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो जैसे ही मुसाद्देक को हटाया, ओके, मुसाद्देक ने रजा पहलवी को हटा दिया था। ओके, तो जैसे ही मुसाद्देक को हटाया गया, तुरंत आप देखेंगे कि वेस्टर्न पावर्स ने क्या किया, वेस्टर्न पावर्स ने शाह रजा पहलवी को, याद रखिएगा, पावर में फिर से ला दिया, जो पहले किंग थे, जो मतलब मुसाद्देक के पहले थे, जिनको मुसाद्देक ने हटा दिया था। क्लियर? सो जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट शाह रजा पहलवी, दैट मीन्स मोनार्क ऑफ ईरान, ही वॉज रिटर्न टू पावर एंड एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी बिकेम बीपी। ओके, तो ये जो एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी थी, ये क्या बन गई? बीपी, दैट मीन्स ब्रिटिश पेट्रोलियम। ओके, ब्रिटिश पेट्रोलियम। ओके, नाउ अब ये जब ब्रिटिश पेट्रोलियम बनी, दैट मीन्स 50-50, जो प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होगा वो 50-50 डिवाइड होगा, किसके बीच में? ब्रिटिश एंड ईरानियन, ईरान के बीच में। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, ये याद रखिएगा। ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब एक चीज आप सोच रहे होंगे कि सर, यूएस और ब्रिटेन ने कभी डेमोक्रेसी लाने की कोशिश क्यों नहीं की मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया में, जबकि यूएस तो पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है? यस, बिल्कुल सही क्वेश्चन रहेगा अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है। सबसे पहली चीज, अगर आप मिडिल ईस्ट वेस्ट एशियन कंट्रीज के लोगों को समझदार बना देंगे, एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, डेवलपमेंट लाएंगे, तो वहां के लोग उन वेस्टर्न पावर्स को, ऑयल को एक्सप्लॉइट करने नहीं देंगे। इसीलिए कभी भी वेस्टर्न कंट्रीज ने, लीड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, these western powers never promoted democracy in west asia and middle east. Getting my point? They always promoted monarchy rule in middle east, okay, because of, for their own interest. So during the same year itself, one important pact was signed, Baghdad Pact. Baghdad Pact. So Baghdad Pact was signed in 1955. Okay. So remember this thing. Okay. So after dethroning of Mossadegh, Raza Khan again came into power. CIA ने रजा खान को फिर से पावर में ला दिया। ओके, एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका केम आउट विद बगदाद पैक्ट 1955। तुरंत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक मिलिट्री अलायंस बनाई विच इज कॉल्ड एज बगदाद पैक्ट ऑफ 1955। ओके, तो ये बगदाद पैक्ट क्या है? इट इज अ सब्सिडियरी अलायंस ऑफ यूएस, सब्सिडियरी अलायंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, now this alliance was signed, was created by US. This subsidiary, this military alliance was created by US with whom? With Central and West Asian nations. With Central and West Asian nations. Okay. So Pakistan was also a member of this alliance. Okay. So remember this thing. Who were the signatories of this pact? अब इस alliance के signatories कौन थे? Now try to understand. Okay, now signatories of this. Now signatories were Saudi Arabia, सऊदी अरेबिया ने साइन किया था। ओके, सीरिया, इराक, ईरान,
एंड देन पाकिस्तान। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जितनी भी कंट्रीज हैं, इन सभी कंट्रीज में कभी भी यूएस ने डेमोक्रेसी लाने की कोशिश नहीं की। इन सभी कंट्रीज में आप देखेंगे मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। और आज आप देखेंगे तो इन कंट्रीज में यूएस ने बाद में इन्वेजन भी किया, और आज इन कंट्रीज की बहुत बुरी हालत है, चाहे वो आप सीरिया देख लें, चाहे इराक देख लें, चाहे ईरान देख लें। ओके। एंड पाकिस्तान ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस में है बिकॉज ऑफ मिलिट्री। सऊदी अरेबिया, अब आप देख रहे हैं कि ग्रेजुअली सऊदी अरेबिया और इंडिया के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, एंड सऊदी अरेबिया एक स्ट्रॉन्ग मोनार्की है। Getting my point? Okay, so these things, I hope this much is clear to all of you. Okay, so the security, now you can see here five countries of this Baghdad Pact alliance. So the security of these countries is now in the hands of United States of America. अब इन countries की security किसके हाथ में है? United States of America के हाथ में है. So now in this situation, Raza Khan decided to internally strengthen his position. So he started reforms in Iran. ओके अब रजा खान को ये डर था कि कहीं फ्यूचर में फिर से कोई ऐसा मुसादिक जैसा लीडर ना आ जाए और उन्हें हटा दे। ओके, सो ही डिसाइडेड टू internally strengthen his position. Getting my point? So he decided to internally strengthen its position. Okay, so he started reforms. तब याद रखिएगा रजा खान ने रिफॉर्म शुरू की, started reforms. This much is clear to all of you. Okay, now we'll try to understand the reforms by Raza Khan. Okay, now try to understand first. Okay, see, मैं आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि आप चीजें आसानी से बहुत ढंग से समझ जाएं। ओके, सो नाउ द रिफॉर्म्स ऑफ रजा खान। ओके, so let me tell you that four important reforms of Raza Khan. Okay, reforms of Raza Khan. Okay, now what are the reforms of Raza Khan? So there are four important reforms. First is land reforms. Another white revolution of 1963. White revolution of 1963. Third one is role of Savak. आई थिंक आप लोगों ने ये चीज सुनी भी नहीं होगी, सो बहुत ध्यान से समझिएगा इन चीजों को। देन इम्यूनिटी टू ब्रिटिशर्स एंड अमेरिकन्स। इम्यूनिटी Britishers and Americans. Okay, so now we'll be discussing the reforms. Okay, so first of all, I'm going to tell you about the land reforms. Okay, now land reforms. See, this was a good attempt by Raza Khan, but it irritated Shia priestly class. इस लैंड रिफॉर्म्स ने जो ईरान के शिया प्रीस्टली क्लास हैं उनको परेशान कर दिया. सो दिस बिकेम an irritation for Shia, that too priestly class. Okay, okay. So this became an irritation for Shia priestly class. Okay, now why? अब ये irritation क्यों हुआ शिया priestly class के लिए? Because 95% of the land was under the control of Shia priestly class. तो 95% land under the control of Shia priestly क्लास. तो ये तो अब इरिटेशन हो गया शियाज priestly क्लास के लिए. सेकंड रिफॉर्म क्या किया? व्हाइट रेवोल्यूशन 1963. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. व्हाइट रेवोल्यूशन वाज एन ओवरऑल रेवोल्यूशन, दैट मींस ओवरऑल चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी. ओके, सो दिस इज a kind of overall changes, overall
changes in terms of, okay, society, polity, and economy. Okay, remember this thing. अब ऑब्जेक्टिव क्या था इस रेवोल्यूशन का? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रेवोल्यूशन वाज टू मॉडर्नाइजेशन ऑफ ईरान विद ग्रेटर एम्फोसिस ऑन मॉडर्न एजुकेशन. गेटिंग माय पॉइंट? सो व्हाइट रेवोल्यूशन किस लिए किया गया था? ताकि ईरान को मॉडर्नाइज किया गया, सो मॉडर्नाइज किया जा सके. सो बेसिकली दिस वाज डन फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ ईरान. एंड सबसे ज्यादा फोकस किस पे? एम्फेसिस ऑन एजुकेशन. एम्फेसिस ऑन एजुकेशन. ओके, रिमेंबर दिस थिंग. एजुकेशन, दैट टू मॉडर्न एजुकेशन. ये याद रखिएगा, मॉडर्न एजुकेशन. ओके, एंड देयर वाज बैन ऑन इररेलेवेंट सोशल कस्टम्स एज वेल एज हिजाब ऑल्सो. तो अब रजा खान ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने की कोशिश की, और वो क्या था? इन चीज के थ्रू बैन करने की कोशिश की. बैन ऑन irrelevant social customs. Irrelevant social customs like hijab. बस अब यहीं पे कुछ गड़बड़ी हो गई. हालांकि रिफॉर्म्स बहुत अच्छे हैं, बट ऑर्थोडॉक्स प्रीस्टली क्लास है तो वो भी सोचना पड़ेगा. देन द रोल ऑफ सवक. अब ये सवक क्या है? सीक्रेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज सीक्रेट पुलिस organization. Okay, and this organization started imposing reforms of रजा खान. तो अब जो रिफॉर्म्स करने कर रहा है रजा खान, तो उसको इम्प्लीमेंट भी तो करने हैं, इम्पोज भी तो करने हैं. तो उसके लिए एक सीक्रेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन बना दी रजा खान ने. ओके, सो दिस organization was created to impose reforms, okay, of Raza Khan, of Raza Khan. I hope this much is clear to all of you. And then immunity to Britishers and American. Now, under this provision, Raza Khan regime gave immunity to American and British citizens from the internal laws of Iran. कि जितने भी ब्रिटिश और अमेरिकन सिटीजन्स हैं उनके ऊपर ईरान के इंटरनल लॉज नहीं इम्पोज होंगे. ओके, सो दिस provision gave immunity to Americans and British citizens, okay, from the internal laws of Iran. ओके, तो अब ये जो रिफॉर्म्स हैं ये ईरान के जो रूलर हैं रजा खान, इनके ऊपर बैकफायर तो करेंगे ही, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स क्लास इनके अगेंस्ट में थी. गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो अब रजा खान के रिफॉर्म्स का इम्पैक्ट क्या पड़ा? नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट. ओके, इम्पैक्ट ऑफ रजा खान रिफॉर्म्स. नाउ impact of Raza Khan reforms. ओके, तो इन रिफॉर्म्स का इम्पैक्ट क्या पड़ा? सी, द रिफॉर्म्स ऑफ रजा खान वर नॉट रॉन्ग. उनके रिफॉर्म्स गलत नहीं थे, बट दे वर बियॉन्ड हिज टाइम. वो टाइम से पहले आ गए रिफॉर्म्स. Getting my point? So people did not accept these reforms which were done by Raza Khan. Okay, so people did not accept these reforms. Okay, and the second thing was that the secret police organization which he has created. Okay, that means the forceful imposing of the reforms irritated the people of Iran at that time. Okay, so now the troubled situation of Iran gave opportunities to the rebels and Shia priestly class. तो अब इन रिफॉर्म्स की वजह से क्या हुआ? This became opportunity, okay, to the rebels and Shia priestly class. Okay, Shia priestly class के लिए ये opportunity हो गई. एंड दे स्टार्टेड प्रोवोकिंग पीपल अगेंस्ट रजा खान. तो इन्होंने भड़काना शुरू किया लोगों को रजा खान के खिलाफ. सो दे स्टार्टेड प्रोवोकिंग पीपल अगेंस्ट रजा खान.
Okay, this much is clear to all of you. Okay, remember this thing. Now, what happened is the unrest was prevailing in Iran. अब unrest हो रही थी, and the biggest cause of tension was that though the okay, so though the earning from the oil exports was increasing, okay, but it did not increase the purchasing power of masses. Okay, तो oil exports जो था, ओके, सो ये जो ऑयल एक्सपोर्ट्स है ये इंक्रीज हो रहा था, दिस वाज इंक्रीजिंग, ओके, दिस वाज इंक्रीजिंग, ओके, बट इट डिड नॉट इंक्रीज द परचेजिंग पावर ऑफ masses, ओके, डिड नॉट इंक्रीज द पावर, परचेजिंग पावर ऑफ masses, परचेजिंग पावर ऑफ masses, तो ऑयल का एक्सपोर्ट तो बढ़ रहा था ईरान में, बट परचेजिंग पावर जो है masses की वो नहीं बढ़ रही थी, गेटिंग माई पॉइंट? Okay, so it was increasing the prosperity and wealth of ruler of Iran. सिर्फ ruler की wealth बढ़ रही थी, people poverty में थे. Okay, so it was increasing the wealth of ruler of Iran. That is Raza Khan. Okay, because large part of the income was going to the Pahlavi Foundation. तो जो large part of income थी वो किसके पास जा रही थी? पहलवी फाउंडेशन के पास. Large part of income, okay, was going to पहलवी फाउंडेशन. अब देखिए एक तरफ तो रिफॉर्म्स में बैकफायर किया, दूसरा परचेजिंग पावर स्टेट की बढ़ी है, लोगों के पास पैसा नहीं है, ओके, और रूलर के पास सारा पैसा जा रहा है. तो ये पूरी तरीके से बैकग्राउंड तैयार हो गया था इरानियन रेवोल्यूशन का, गेटिंग माई पॉइंट? अब ऐसी सिचुएशन में जब भी सोसाइटी में क्राइसिस होती है, तब कोई भी अगर समझदार इंसान होगा उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर यूज कर सकता है, गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो नाउ इन दिस सिचुएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल लीडर सामने आते हैं, अयातुल्ला रूहुल्ला खोमेनी. ओके, so now during this time period you will see that the role of ayatollah, as you can see here, okay, ayatollah Ruhollah Khomeini, he was a spiritual leader, getting my point? Okay, remember this thing. ये कौन थे? ये थे spiritual leader, spiritual leader. Okay, remember this thing. So he started silent propaganda against the ruler of Iran. अब इन्होंने एक प्रोपेगेंडा शुरू किया ईरान के रूलर के अगेंस्ट में. ओके, सो खोमेनी साहब आ गए. ओके, अयातोल्ला Khomeini. So what he did, he was a spiritual leader, so he started silent propaganda, okay, against ruler of Iran. This much is clear to all of you. तो अब लोगों को समझाया जाएगा, ओके, रिमेंबर दिस थिंग. तो अब लोगों को कैसे लाना है? लोग रिलीजन के नाम पे आ जाएंगे, तो इन्होंने बोला कि ये जो रजा खान है इसका बिहेवियर अन इस्लामिक है, गेटिंग माई पॉइंट? सो ये पूरी तरीके से फैला दिया गया दैट रजा खान behavior is un-Islamic in nature, clear? And जिसकी वजह से masses क्या हो गए? Provoked. Masses were provoked. Clear? So before Raza Khan would understand this development, the entire situation of Iran started turning against him. Okay. So everyone, okay, was turning against Raza Khan. This much is clear to all of you. Now, in the last phase of 1978,
Now, last phase of 1978, Iran saw the beginning of mass protest against रजा खान. अब लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया. मास प्रोटेस्ट. लोगों ने प्रोटेस्ट किए, डेमोन्स्ट्रेशन किए. ओके, स्ट्राइक्स की अगेंस्ट रजा खान. ओके, against Raza Khan. So before Raza Khan would control the situation, इससे पहले रजा खान कुछ कंट्रोल कर पाते हैं. इन जनवरी 1979 entire population stood up against Raza Khan. Okay, so in January 1979 entire population stood up against Raza Khan. This is the most important event. Getting my point? एंड समहाउ रजा खान मैनेज टू एस्केप फ्रॉम ईरान. तो किसी तरह ये भाग आए ईरान से. ओके, रजा खान एस्केप फ्रॉम ईरान. This was the situation. Okay, so this resulted into, and finally, now try to understand, finally, first, okay, therefore, 1st April 1979, ईरान क्या बन गया? ईरान became Islamic Republic. Iran became Islamic Republic country. Okay, remember this thing. तो ये कौन सी कंट्री बन गई? शिया कंट्री. This is the only Shia country. Getting my point? Okay. And who became ruler? Ruler कौन बने? Ruler was Ayatollah Khomeini. Ayatollah Khomeini, who was the spiritual leader. ओके, रिमेंबर दिस थिंग. और इन्होंने सबसे पहली चीज क्या की? जो भी फॉरेन प्रॉपर्टीज थी उनको नेशनलाइज कर दिया. गेटिंग माय पॉइंट? ही डिक्लेयर्ड नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल फॉरेन प्रॉपर्टीज. फॉरेन प्रॉपर्टीज. और यहीं से यूएस और ईरान दुश्मन हो जाएंगे. समझ में आ रहा है? क्योंकि अभी तक क्या कर रहे थे? वेस्टर्न कंट्रीज ईरान के ऑयल को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, बट अब सब खुमानी साहब ने क्या किया? इन्होंने पूरे चीजों को nationalize कर दिया. Getting my point? And while addressing the people, Khomeini said that God's rule has started. Getting my point? And he also said that the first priority of this rule is to eliminate evils in this world, that is United States of America. So he said, okay, to eliminate evils, that is United States of America. And from here itself, USA and Iran became enemy. यहीं से ईरान और यूएस के रिलेशंस क्या हो गए? खराब हो गए. So this is all about West Asian crisis, Iran crisis. So this changed the geopolitical scenario. Okay, and this is how the Iran and US relations are having enmetic relations. Okay, now both are competitive or rebel countries. Okay, so Iran is against against in the interest of United States of America. So this is how the geopolitics of West Asia has been changed from 1979. Now one more issue was started from there itself. Now Iran is a Shia country and Saudi Arabia, it promotes Sunni. Getting my point? Sunni country. So from here, अब जो दो कंट्रीज थी, सऊदी एंड ईरान, वो भी उनके रिलेशंस भी क्या हो गए? उनके रिलेशंस भी याद रखिएगा, एनिमी में कन्वर्ट हो गए.
Getting my point? So this is how Iranian revolution changed the geopolitics of Middle East. So I hope this session is beneficial for you. Okay. So like and subscribe our channel, that is IQ Civils IAS Academy, and to download the PDF of this session you can join our Telegram channel. Okay, and जितने भी लोग तैयारी करने की सोच हैं जल्द से जल्द admissions लें because new batches are going to start from 5th of August and 10th of August. Thank you so much.